Hello students, I hope you all are fine. So the topic that we'll be dealing with today is transport across plasma membrane. Okay, so we'll be studying different mechanism by which transport across plasma membrane is made feasible. So as we have all studied the lipid bilayer structure of plasma membrane, and we have also studied that plasma membrane, it is semi-permeable in nature. What do we understand by semi-permeable? That it is permeable to certain substances, which means that it allows certain substances to pass through the plasma membrane, whereas it blocks the other substances. Okay, so it is semi means some, okay, half permeable to some substances only. So due to the semi-permeable permeability nature of plasma membrane, the plasma membrane functions in maintaining the homeostasis of the cellular environment, and it makes cytosol environment different from the extracellular environment. Okay, by maintaining the selective permeability of substances across the plasma membrane. Okay, so the mechanisms that are used for transport across the plasma membrane. Okay, so normally the transport, it is done by two methods. One is passive process and the other one is active process. Okay, so for the passive process, it is again divided into two processes. One is simple diffusion and other one is fascilated diffusion. Okay, so what is passive process? So in passive process, the molecules or the substances that are to be passed through the plasma membrane, they simply diffuse across the plasma membrane along their concentration gradient. That is, the substances, they travel from their higher concentration to their lower concentration. Okay, and passive process, student, the diffusion, it is the simplest mechanism by which the molecules, they can cross the plasma membrane. Okay, so the passive process, it is, the one is simple diffusion and the other one is fascilated diffusion. And in active process, the other one, the active process, it involves the use of ATP, adenosine triphosphate, for the transport of molecules along the plasma membrane. In passive process, there is no involvement of ATP. No ATP is required in transporting the molecules across the plasma membrane via the passive process, but ATP are required for transport via the active process. Okay, why ATP is required? Because in active process, the transport of molecules, that occurs against the concentration gradient. Okay, the molecules, they travel from their lower concentration to the region of their higher concentration. मतलब जहाँ already concentration ज़्यादा है उस तरफ ही molecules pass कर रहे हैं. So that's why it requires ATP. Okay, and the active process, again, it is also divided into two types. One is primary transport and the other one is secondary transport. Okay, so in detail we'll study further what is primary and what is secondary transport. So firstly, let us see passive process. Okay, so passive process, the first one is simple diffusion. So what occurs in simple diffusion? यहाँ जो हमने देखा था, the first one, simple diffusion. So what occurs in simple diffusion, that the molecule, it simply dissolves in the phospholipid bilayer and it diffuses across it. Okay, and then dissolve in the aqueous solution at the other side of the membrane. तो molecule क्या है? It dissolved in the plasma membrane, और वो plasma membrane के अंदर क्या है? That means that the molecule, it is interacting with the hydrophobic interior of the plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिजॉल्व होकर मॉलिक्यूल गया है एंड देन इट रीचेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू द साइटोसोलिक साइट, टू द साइटोसोल. Okay, that is simple diffusion. So here we can see, it is generally, this diagram, it is showing the semi-permeability nature of phospholipid bilayers, that is the plasma membrane. Okay, so we can see that the gases, it can easily pass through the plasma membrane by simple diffusion. Also, the hydrophobic molecules like benzene, it can also pass through the hydrophobic interior of the plasma membrane. Okay, and also small polar molecules like water and ethanol, they can also pass through the plasma membrane. But the large polar molecules and the charged molecules, various charged molecules like amino acids and various ions, they cannot pass through the plasma membrane through diffusion. Okay,
Now the second one is fascilated diffusion. So fascilated diffusion means that the diffusion, it is taking place with the help of certain proteins. Okay, जो हमने पढ़ा था कि there are proteins embedded in between the plasma membrane. Okay, so some of those proteins, they help in transport of molecules across the plasma membrane. So the fascilated diffusion, it occurs through two types of protein. One is carrier protein and the other one is channel protein. Okay, so in fascilated diffusion, what happens, the molecule that is being transported across the plasma membrane, it does not come in contact with the hydrophobic interior of the plasma membrane. ठीक है, वो plasma membrane के से contact में नहीं आ रहा है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, here this molecule that is being transported, it is not coming in contact with the plasma membrane. Plasma membrane का जो hydrophobic interior है, इसके contact में नहीं आ रहा है ये. It is being transported via this protein that is embedded in the plasma membrane. Okay. So again, in this fascilated diffusion, it is, we all know that it is like passive diffusion का, it is one of the sub part. तो fascilated diffusion में भी क्या होगा, the movement of molecule, it will take place along the concentration gradient, that is from its higher concentration to its lower concentration. Okay, fascilated diffusion का literal meaning क्या है बच्चों, that is the diffusion, it is facilitated by something. मतलब जो diffusion है उसको some other protein or some other element is helping in the diffusion. Okay, so this fascilated diffusion, it is mediated by two kind of protein. One is the carrier protein and the other one is the, yes, channel protein. Okay, these is and ion channels it is written, so other one is the channel proteins. So what happens in the carrier protein, you can see that the molecule, it binds to one side of the carrier protein. Like here, this glucose molecule, it is binding on the outside of the cell. So the molecule, it binds to one side of the carrier protein, and upon binding of the molecule, the conformation of this carrier protein, it changes. Okay, and इसका conformation change हुआ, and then the molecule, it is released on the other side of the plasma membrane. ठीक है, and upon release of the molecule, the conformation, it again changes to the original conformation. Okay, so this is how carrier proteins work. So carrier proteins, they are majorly responsible for fascilated diffusion of sugars, amino acids, and nucleoside along the plasma membrane of most cells. Okay, so here it is shown one carrier protein, which is one carrier which is for diffusion of glucose. Okay, so the glucose molecule, here we can see that the glucose molecule, it is binding to this carrier protein on the extracellular side of the plasma membrane, and upon binding of glucose molecule, the conformation of this carrier protein, it has changed, and this carrier protein, it has released the bound glucose on the cytosolic side of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो नॉर्मली क्या होगा, ग्लूकोज जो हमने देखा था लास्ट डायग्राम में, लास्ट फिगर में, दैट ग्लूकोज इट कैन नॉट पास परमिएट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन, ग्लूकोज क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड से सेल के अंदर आ गया है. ओके, सो द अदर वन, दैट इज द channel protein mediated fascilated diffusion. Okay, so on contrary, channel protein में क्या है, that channel protein, it is, देखो, it is like a channel. Okay, so here this is like a channel. So any molecule which is of the appropriate size and charge can pass through this channel protein. Okay. So there are three main features of these channel proteins. So the first one is that transport through the channel proteins, it is extremely rapid. Okay, so the transport from the channel proteins, it is like 1,000 times greater than the rate of transport via the carrier proteins that we just studied. And the second property is that these ion channels, they are highly selective because there is narrow pore. Okay, so the molecules which are of appropriate size and charge can only pass through these ion channels. And third one is that most ion channels, so here we can see, here you can see in this diagram, student, that there is a gate present. Okay, there is a gate here. Okay, so most of the ion channels, they are guarded by this gate. Okay, so in normal condition, the ion channels, they are closed here, but these ion channels, they open in response to certain stimuli. Okay, and then
it allows the passage of the molecules across it, and those stimuli, they can be like they can be ligand gated ion channels. So what happens in ligand gated ion channels? What do you understand by ligand? हर receptor का एक ligand होता है ना. So these are the, in case of ligand gated ion channels, what happens that when a ligand bind to this ion channel, तभी क्या होगा, this gate will be open. These gates, these are this is gated by ligand. Okay, तो जब ligand अपने receptor पर bind करेगा इस channel में, then this gate will open and it will allow the passage of the molecules around it. The other one is voltage gated ion channels. So voltage gated ion channels में क्या होगा, that when the voltage across the plasma membrane जब एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंचेगी तभी क्या होगा, दीज आयन चैनल्स दे विल ओपन, अदरवाइज दीज आयन चैनल्स विल रिमेन क्लोज. ओके, सो द चैनल्स इन जनरल, अगर हम चैनल्स देखें तो चैनल्स जो which function in transport of molecules across the plasma membrane, one very common is एक्वापोरेंस. जो हम पढ़ते हैं एक्वापोरेंस, अगर स्टूडेंट जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं कि जब नेफ्रॉन में आखिरी में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं इन पैसेज ऑफ वाटर. ठीक है, तो वाटर हमने अभी देखा था कि वाटर जो नॉर्मली भी डिफ्यूज़ होकर चले जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बट एक्वापोरेंस से द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिकम्स higher. Okay, so aquaporins is one of the channel protein and the other one is the ion channels. Fine. Okay, so yes, moving forward, so this is how the passive diffusion occurs. Okay, the passive transport occurs. First one is the simple diffusion, which occurs when the molecule, it simply dissolves and diffuses across the plasma membrane. And the second one is fascilated diffusion, which occurs with two types of proteins. One is the carrier protein and the other one is the channel protein. Okay, so here in this diagram you can see, students, the one I was talking, like I just told you about ligand gated ion channels. Okay, so here you can see this is a synaptic bulb of a neuron. Okay, so here neurotransmitters, when the nerve impulse, it reaches at the synaptic terminal, so what happens, the neurotransmitter that are entrapped in the synaptic vesicles, it starts fusing with the axon terminal, and this neurotransmitter, it is released in the synaptic cleft. Okay, so here you can see that the neurotransmitters, they are released in the synaptic cleft, and these are the ligand gated ion channels. Now here in this figure, when there are no neurotransmitters, the neurotransmitters, they are the ligand for these channels. Okay, so when there are no neurotransmitter presence in the synaptic cleft, the ligand gated ion channels, they are in closed condition, in closed state. Okay, but when upon the reaching of nerve impulse at the axon terminal, these neurotransmitter, they are released on the in the synaptic cleft. तो क्या होगा, now this neurotransmitters, they will bind to this ligand gated ion channel, and these channels, they will now open. Okay, और फिर उसके बाद जिस भी आयन के लिए चैनल स्पेसिफिक है उनका ट्रांसपोर्ट होगा across this membrane. Okay, so that is how ligand gated ion channels work. Okay, moving forward. So the other property of ion channel that we studied was that the ion channels, they are selective in nature. Okay, so they allow only those molecules to pass that are of appropriate size and appropriate charge. So here we can see that this is the Na positive channel. So here in this diagram, the selectivity of Na positive channels is shown. So here you can see that this Na positive plus H2O, okay, the Na positive molecule, which is here associated with H2O, it is allowed to pass through the Na positive channel. But this K positive molecule, it is not of appropriate size. The pore, it is smaller for the K positive molecule to pass through the channel. Okay, so that is how the selectivity of the Na positive channel is maintained. And here in this diagram, the selectivity of K positive channel is shown. Okay, so what happens in K positive channel, the carbonyl oxygen is present at the rim of this on the rim of this K positive channel. Okay, so what happens when this K positive plus H2, when this hydrated K positive, it interacts with the carbonyl oxygen, it reduces this K positive, it removes the H2O from this K positive, it dehydrates the K positive, and then the K positive, it moves across the
across the channel to the other side of the plasma membrane. Okay, but this Na positive, this hydrated Na positive जब कर रहा है, देखो यहाँ you can see that the K positive molecule, it is interacting with the carbonyl oxygens and then it is getting dehydrated. Okay, but here this Na positive, due to the smaller size of Na positive in with respect to K positive, this Na positive, it is unable to interact with the carbonyl oxygens of the channel protein, which और कार्बोनिल ऑक्सीजन से ये इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, दिस Na पॉजिटिव इट विल नॉट बी डिहाइड्रेटेड, एंड अगर ये डिहाइड्रेट नहीं होगा सो ये Na पॉजिटिव इट विल बी लार्जर देन द पोर साइज. ठीक है, अगर ये डिहाइड्रेट नहीं होगा तो अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल द साइज ऑफ दिस हाइड्रेटेड Na पॉजिटिव इट इज लार्जर देन द पोर साइज ऑफ दिस चैनल प्रोटीन. Okay, so that is how selectivity of K positive channels is maintained. And also students, one more important thing that is to be noted is जब भी हम passive diffusion की बात कर रहे हैं, okay, so in case of uncharged molecules, जैसे अगर हम ग्लूकोज के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो उसमें the molecule it will pass across the membrane along its concentration gradient, okay, from its higher concentration to the lower concentration. But if the transporting molecule it carries a net charge, like in case of ions, so the movement of the ions it is influenced both by its concentration gradient, one thing, and the membrane potential. Okay, that is the electric potential across the membrane, which side of membrane is more positive or more negative. Okay, so the transport of the ions it is influenced both by its concentration gradient, मतलब जो the quantity of ion किस side of the membrane में ज़्यादा है, and also by the electric potential across the membrane. Okay, so no सो दिस चार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें हम इसे हम इस उसमें भी कह सकते हैं दैट द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स अलोंग द membrane it is influenced by its electrochemical gradient, not only by its concentration gradient but by its electrochemical gradient. Okay, the ions it passes along its electrochemical gradient. Okay, so now we have studied the passive transport. So now the next thing is the active transport. Okay, so active transport, as I already told you कि active transport में क्या होगा, that the movement of the molecules, the transport of the molecules it will occur against its concentration gradient. That is, the molecules or the ions it will travel from the region of its lower concentration to its higher concentration. जहाँ पे already ज़्यादा है concentration, उसी तरफ जो molecules हैं वो pass करेंगे. ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखो कि कोई दो टैंक अगर पानी के होते हैं, ठीक है, और उसे नीचे से अगर इंटरकनेक्ट कर दो पाइप से, तो क्या होगा, जिस टैंक में ज़्यादा पानी होता है उस टैंक से पानी जाता है जिस टैंक में कम पानी होगा, एंड देन इवेंचुअली वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है उन दोनों के बीच में स्टॉप हो जाता है जब दोनों टैंक में क्या होता है, इक्वल पानी आ जाता है ना. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन. ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, कोई एनर्जी भी नहीं लग रही है. द वाटर इट इज़ मूविंग अलॉन्ग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कम है उसकी तरफ जा रहा है. लेकिन अगर पानी जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कम पानी है, उस तरफ से पानी दूसरी तरफ ले जाना है जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा पानी है, तो हमें क्या लगेगा, देन हमें मोटर यूज़ करनी पड़ेगी. ओके, तो क्या होगा, जब भी हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी चीज़ मूव कराते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सर्व सम पावर. ओके, so same here in active transport. So I told you that active transport it is divided into two parts: primary active transport and secondary active transport. Okay, so in primary active transport the movement of the molecules it is driven by ATP hydrolysis. The energy for the movement of the molecules against its concentration gradient it is generated by hydrolysis of ATP. Okay, so here in this diagram it is shown a sodium potassium pump. Okay, so the sodium potassium pump it is a very common example of this active transport. Okay, and the sodium potassium pump it helps in maintaining the membrane potential, the electric potential across the membrane, which is required for conduction of nerve impulse. Okay, and conduction of impulses in muscle cells. Okay, so this sodium potassium pump it is very important kind of pump which shows active transport. Okay, तो इसमें जैसे हम देखते हैं that here see in the first diagram here. Okay,
सो नॉर्मली क्या होता है ना स्टूडेंट्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इट इज़ हायर ऑन द साइटोसोलिक साइड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव इट इज़ हायर ऑन द साइटोसोलिक साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इज हायर ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, सॉरी। ठीक है, तो Na पॉजिटिव क्या होता है, Na पॉजिटिव सेल के बाहर ज़्यादा होता है एंड K पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज हायर इनसाइड द सेल। ओके, सो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि Na पॉजिटिव को ये जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में Na पॉजिटिव ज़्यादा है तो इट ट्रांसपोर्ट्स Na पॉजिटिव आयंस साइटोसोलिक साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, सी here in this first diagram that 3 Na positive it binds on the cytosolic side of this pump, the sodium potassium pump. Okay, तो क्या होगा जब 3 Na positive ions it binds on the cytosolic side, तो क्या होता है 1 ATP molecule it hydrolyzes. Okay, ATP molecule का hydrolysis होता है and 1 amino acid residue on this sodium potassium pump it gets phosphorylated. तो क्या होगा when this amino acid residue it phosphorylates, the conformation of the sodium potassium pump changes, जो हम यहाँ देख सकते हैं. Okay, so the conformation of the sodium potassium pump changes and the 3 bound sodium ions they are released on the extracellular side of this plasma membrane. Okay, then what happens, okay, then what happens in the changed conformation, 2 K positive ions, now this carrier protein it is this ATPase pump it is open on the extracellular side. Okay, now क्या होता है जो ये changed conformation है इसमें 2 K positive ions bind करेंगे from extracellular side. extracellular side से 2 K positive ions क्या किए, they got bound to this protein. ठीक है, जैसे ही के पॉजिटिव आयंस बाइंड करेंगे तो ये जो फॉस्फोराइलेट हुआ था अमाइनो एसिड इट गेट्स डीफॉस्फोराइलेटेड. ओके, नाउ अब क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था वो हट गया है, तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन. ठीक है, एंड दिस प्रोटीन इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन, और जो दो उसमें के पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से बाउंड हुए थे दे गॉट रिलीज्ड ऑन द साइटोसोलिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में 3 Na positive ions they are transferred from cytosol to the extracellular side and 2 K positive ions they are transferred from extracellular matrix to the cytosol. Okay, since यहाँ पे क्या है, एक ATP का ब्रेकडाउन हुआ है इनटू ADP एंड फॉस्फेट, तो दिस इज ATPase. ठीक है, ATP का ब्रेकडाउन जो भी वो करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ATPase बोलते हैं, जो भी हमारा कॉम्पोनेंट ATP का ब्रेकडाउन करता है. सो दिस पंप इट इज़ नोन एज सोडियम पोटेशियम ATPase. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो वन फंक्शन जो हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप का वन मेजर फंक्शन वाज दैट it establishes the electrochemical the membrane potential which is required for the propagation of electric signals in nerve and muscle cells. Okay, and one another important function of the sodium potassium pump is that it prevents the it maintains the osmotic balance and the cell volume. How? So what it सो क्या होता है कि सेल के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इज़ हायर इनसाइड द सेल. ठीक है, तो क्या होगा अगर कोई काउंटर बैलेंस नहीं होगा कि सेल के बाहर भी इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर नहीं प्रेजेंट होगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी काउंटर बैलेंस, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर इनसाइड द सेल. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वाटर का हमेशा अगर हम ऑस्मोसिस देखते हैं तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहीं को वाटर मूव करेगा. तो अगर सेल के अंदर ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, अगर सेल के बाहर भी इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, द वाटर इट विल travel, it will transport from outside to inside of the cell and it will eventually lead into the swelling and bursting of the cell. Okay, so the sodium potassium pump it also helps in maintaining the osmotic balance and cell volume. Okay, तो जो हमने स्टूडेंट जो हमने अभी पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप, it was an example or a kind of the active pumps. Okay, the ion pumps that
ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स वाया द एक्टिव प्रोसेस. ओके, तो जैसे हमने ये सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा, ऐसे ही Ca2 पॉजिटिव पंप होता है, कैल्शियम आयन पंप, विच actively transport Ca2 positive across the plasma membrane, and it is similarly the Ca2 positive ions, they are similarly powered by ATP hydrolysis. Their transport is powered by ATP hydrolysis. And Ca2 positive pump से क्या होगा, the Ca2 positive ion, it is transported out of the cell, okay, from inside to the outside, क्योंकि जो intracellular concentration of Ca2 positive ions होता है, it is extremely low. ठीक है, but still the transport of ions, it is happening from the lower concentration to the higher concentration. Okay, so this is the active transport. Active transport is occurring here. So another ion pumps that show this active transport are the H positive ion pumps. ठीक है, H positive ion pumps, they are present in plasma membranes of various bacteria and yeast, and also on the epithelial cells of the stomach lining. And through these pumps, the H positive, it is actively pumped out of the cells. Okay, in bacteria and all, the active transport of H positive occurs out of the cell to the ECM. And similarly in cells of stomach lining, cells lining the stomach, H positive, it is actively pumped out of the cells, which results in the acidity of gastric fluids. Okay, and also H positive pumps, they are present in the membrane of lysosomes. Okay, लेकिन lysosomes में क्या होगा, H positive का transport will be in opposite direction. lysosomes में क्या होगा, cytosol से lysosome के अंदर जो है H positive ion का transport होगा in order to maintain the pH of the lysosomes. lysosome का pH क्या होता है, हमेशा less होता है. that means more H positive ions are present inside the lysosomes. Okay, तो क्या होगा, जो active ion pumps, active H positive ion pumps lysosome के membrane में present होते हैं, they are responsible for transport of H positive ions from its lower concentration, that is from the cytosol, to its higher concentration, that is inside the lysosomes. Okay, and also, yes, okay, and also these ABC transporters. Okay, these ABC transporters, they are also an example of प्रोटीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स जो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को पास कराते हैं थ्रू देम वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो दिस ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली जो है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं. वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ proteins, transport proteins, they come under this ABC transporter family. Okay, so why it is known as ABC transporter? क्योंकि इसमें क्या होता है, ATP बाइंडिंग कैसेट, इट इज ATP बाइंडिंग कैसेट, ATP बाइंडिंग B कैसेट से C. ओके, ATP बाइंडिंग कैसेट जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ABC ट्रांसपोर्टर. ठीक है, तो जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन बैक्टीरिया में होता है टू ब्रिंग वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे आयन, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड इनटू द सेल. ओके, आउटसाइड द सेल से आयंस, न्यूट्रिएंट्स और शुगर्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनटू द इनसाइड ऑफ द सेल. ओके, और यूकैरियोटिक सेल्स में ABC ट्रांसपोर्टर्स का क्या फंक्शन होता है, इनका मेजर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज आउट ऑफ द सेल. ठीक है, ओके, moving forward. Okay, the second one is active transport driven by ion gradients. So this is the secondary एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हमने देखा था जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये दो तरह का था, वन इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इसमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी चाहिए टू पंप द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो किससे मिलती है, दैट एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP. लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी चाहिए होती है फॉर movement of substances or movement of molecules along its concentration gradient, that energy, it is derived from the coupled transport of a second molecule in the energetically favorable direction. That is, इसका क्या मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा, जैसे पैसिव डिफ्यूजन में करता है ना. तो जब एक मॉलिक्यूल अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी से द अदर मॉलिक्यूल इट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन.
ठीक है। तो इसमें हम एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की, दूसरे मॉलिक्यूल से विच इज़ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम इट्स अलॉन्ग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग अलॉन्ग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उससे जो एनर्जी डिराइव हो रही है दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल टू ट्रांसपोर्ट against its concentration gradient. Okay, so that is active transport that is driven by ion gradients, and it is known as secondary active transport. Okay, so here in this diagram, active transport of glucose is shown. Okay, so this is the intestinal lumen, the lumen of intestine. ठीक है, तो intestinal lumen में जो cells line करती हैं intestinal lumen को, वो क्या करती हैं, it absorbs all the nutrients from the digested food. ठीक है, तो क्या होता है, देखो जो ग्लूकोज का concentration, ये हमारा क्या है, outside, these are the cells lining the intestinal lumen, that is this is the outside and this is the inside. तो ग्लूकोज का concentration is higher inside the cells that are lining the intestinal lumen. लेकिन क्या है, ग्लूकोज has to be absorbed from outside of the cell, जहाँ ग्लूकोज का concentration कम है, into the inside of the cell. ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या होना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है from its lower concentration to its higher concentration. ओके, अभी हमने पिछले उसमें बात की थी दैट सोडियम का जो सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ हायर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, तभी हमने सोडियम पोटेशियम पंप में भी देखा था कि जो सोडियम आयन है दैट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल, जहाँ ऑलरेडी वो ज़्यादा है. तो इसमें क्या है, देखो स्टूडेंट, जो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जो सोडियम है, first thing, the sodium, it is being transported from its higher concentration to its lower concentration. ठीक है, सोडियम अपना it is being transported along its concentration gradient. Now अब sodium, when it is being transported along its concentration gradient, the energy that is generated, it is used in transport of glucose from its area of lower concentration to its region of higher concentration. Okay, so that is how the active transport of glucose is mediated by the sodium ion or transport. Okay, so yes, here the same thing is shown. These are the two cells. Okay, तो उसमें वही दिखा रहे हैं, and now here we can see that these two Na positive, here see in this figure, two Na positive have bound to this protein, and one glucose molecule is bound. Now upon binding of these two Na positive and one glucose molecule, the conformation of this carrier protein has changed, and this two Na positive ions and one glucose molecule, it is now released on the inside of the cell. Okay, and now glucose transport by intestinal epithelial cells. तो जो intestinal epithelial cells होती हैं students, you know that the intestinal epithelial cells, they are polarized in nature. What do we mean by polarized? That one surface of intestinal epithelial cell, जो इनका apical domain होता है, so the apical domain of intestinal epithelial cells, it is towards the intestinal lumen, और जो इनका basolateral surface है या basolateral domain है, it is towards the blood capillaries. Okay, basolateral domain जो है, it is in contact with the connective tissue and blood capillaries. ठीक है, तो क्या होता है, and these epithelial cell, they are connected with each other via tight junctions, कि इनके बीच से cells के बीच से nothing can pass through in between the cells since they are connected via the tight junctions. तो जो ग्लूकोज है, जो हमने अभी देखा दैट द ग्लूकोज दैट इज, इस पैनल में वो दिखा रहे हैं जो हमने अभी लास्ट डायग्राम में देखा, दैट द ग्लूकोज अलॉन्ग विद Na positive ions, it has transported from the intestinal lumen into this epithelial lining का जो सेल है. ओके, नाउ दिस ग्लूकोज, अभी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से सेल के अंदर तो आ गया, नाउ दिस ग्लूकोज इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड सेल के बेसोलेटरल डोमेन की तरफ से, दिस ग्लूकोज हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द blood capillaries, in the connective tissue and blood supply, it has to be transported. ठीक है, तो ये जो ये एपिकल डोमेन है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ. लेकिन जो बेसोलेटरल डोमेन है, जो हमने अभी देखा कि सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इज हायर. ओके, नाउ अब बेसोलेटरल डोमेन में क्या होगा, द ग्लूकोज थ्रू फैसिलेटेड डिफ्यूजन
जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है, थ्रू फैसिलेटेड डिफ्यूजन इट विल पास फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन जो सेल के अंदर है टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू मतलब कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड सप्लाई को पास हो जाएगा. सो दिस इज हाउ ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड वाया द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स. ओके, तो जो एपिकल डोमेन है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल का सेल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल का जो एपिकल डोमेन है वहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेयर एज जो इसका बेसोलेटरल डोमेन है वहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया पैसिव डिफ्यूजन. ओके ओके, सो या सो एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोड, तो जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, दैट टू मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग पास्ड, एक ही जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, एक ही जो कैरियर प्रोटीन है, उसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स का पैसेज हो रहा है. ठीक है, तो हियर इन दिस वी सॉ दैट जो ग्लूकोज है और Na पॉजिटिव है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, ग्लूकोज एंड Na पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स बोथ ऑफ देम दे आर मूविंग टू द सेम डायरेक्शन. तो ये क्या है, दिस इज सिम्पोर्ट. ओके, बट जब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स दे आर साइमल्टेनियसली बीइंग पास्ड थ्रू अ कैरियर प्रोटीन और एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन की तरफ पास हो रहा है एंड द अदर मॉलिक्यूल इज बीइंग पास्ड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपोड बोलते हैं. ओके, so here you can see here an example of antipode is shown. तो यहाँ पे क्या है, these are H positive pump. So here two kind of pumps are shown. One is the Ca2 positive pump. One is the Ca2 positive pump and other one is the H positive pump. Okay, so here in both of these you can see that the Na positive, it is being transferred along its concentration gradient. Okay, that is it is the energetically favorable import of Na positive is getting done in both of these diagrams. Okay, whereas the transport of other molecule, that is Ca2 positive in this pump and H positive in this one, तो ये दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, तो ये क्या है, अगेन दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट यू कैन सी दैट बोथ द मॉलिक्यूल्स दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दीज आर एंटीपोर्टर्स, these channels are known as antiporters, whereas the previous one here, this glucose transporter, these are known as symporters, since the transport of both the molecules, it is occurring in the same direction. Okay, तो स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा दैट कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स और जो भी हमारा पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स पास होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल पास थ्रू दीज प्रोसेसेस. ठीक है, सो in order for the large molecules to transport across the plasma membrane, endocytosis process is needed. ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से क्या होगा, द लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सेल, दे आर इंटरनलाइज्ड बाय एंडोसाइटोसिस. ओके, so endocytosis, it is majorly of two types. One is phagocytosis and the other one is pinocytosis. So phagocytosis, it is ingestion of large molecules, okay, which is also known as cell eating. And phagocytosis, we know that specialized cells are there in system for phagocytosis. जो हम mammalian उसमें अगर देखते हैं, so neutrophils and macrophages, they have phagocytic functions. Okay, तो the first one, that is phagocytosis. So phagocytosis में क्या होगा, that the bacteria or any other extracellular molecule that is to be phagocytosed, तो उसके around जो ये plasma membrane है, इससे क्या होगा, इन्वेजिनेशंस जो स्यूडोपोडियम बनाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, इट विल सराउंड दैट पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल और बैक्टीरिया, और उसके अराउंड अपना स्यूडोपोडियम बनाएगा. एंड देन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट विल बी पिंच्ड ऑफ. ठीक है, इन्वेजिनेशन होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट विल बी पिंच्ड ऑफ इन फॉर्म ऑफ वेसिकल इनसाइड द सेल. ठीक है, एंड नाउ दिस इज नोन एज फेगोसोम. एंड दिस फेगोसोम, इट विल इवेंचुअली मर्ज विद द लाइजोसोम्स. और लाइजोसोम्स के अंदर क्या होगा, दिस बैक्टीरिया इस लाइजोसोम के अंदर ड्यू टू वेरियस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द लाइजोसोम एंड इट्स low pH, this bacteria, it will be destroyed. Okay, so that is how phagocytosis takes place. Now the other form of endocytosis, or the other type of endocytosis, is pinocytosis. Okay, so this phagocytosis, it is known as cell eating, and the pinocytosis, it is known as
सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, दैट द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दीज, तो सर्टेन सम थोड़ा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर इंटरनलाइज्ड इन पिनोसाइटोसिस. So in pinocytosis, uptake of fluids or macromolecules in small vesicles is done. Okay. So now the pinocytosis process, it is receptor mediated. Okay. The pinocytosis जो process होती है, it is वेरी ऑफन, हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जो पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, दैट इज इंटरनलाइजेशन इन स्मॉल वेसिकल्स, उसमें क्या होता है, सर्टेन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व. ओके, सर्टेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जिसमें जो पिनोसाइटोसिस शो करेगा, एंड इट विल इंटरैक्ट विद द मैक्रोमोलिक्यूल और द फ्लूइड कॉम्पोनेंट दैट इज टू बी इंटरनलाइज्ड. एंड जब वो रिसेप्टर इंटरैक्ट्स विद द macromolecule that is to be internalized, फिर क्या होगा, then the process of pinocytosis it will initiate. Okay, so the pinocytosis, it is of two types. Okay, this receptor mediated endocytosis जिसे हम बोलते हैं, it is of two types. One is clathrin mediated. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो ये पिनोसाइटोसिस है, द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जिसे हम बोल रहे हैं, ओके, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में देयर इज सेलेक्टिव अपटेक ऑफ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स. सिंस इसमें रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व, तो रिसेप्टर क्या होगा, इट विल सेलेक्टिवली बाइंड टू सर्टेन लाइगेंड्स. तो सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स is done in receptor mediated endocytosis. Okay, तो जो the macromolecule that is to be internalized, what happens, that macromolecule it first bind to specific cell surface receptors. Okay, and these receptors here you can see, these are the receptors. Okay, ये जो purple है, and these receptors they are present in a area which is in a pit, clathrin coated pit. Okay, so most of these receptors they are concentrated in specialized regions. ये receptors mostly इन्हीं regions पे होते हैं which are surrounded by the clathrin coated pits. Okay, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसी रीजन में ये receptors ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जहाँ क्या होगा, clathrin coated pit होगा. Okay, so these clathrin coated pit क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल दीज आर द लाइगेंड. तो लाइगेंड जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सो दिस क्लैथरिन कोटेड पिट, ये क्या होगा, इसका इन्वेजिनेशन होगा, एंड देन देयर इज अ प्रोटीन नोन एज डायनामिन. Okay, this is a GTPase protein. So this dynamin protein, ये क्या करेगा, it will help in pinching of this clathrin coated vesicle from the plasma membrane. Okay, now this clathrin coated vesicle, it is pinched off from the plasma membrane and it is present as a vesicle inside the cytosol. Okay, then yeah, so these okay, here it is shown that these this clathrin protein, it is present on the cytosolic side of the plasma membrane. ये हमारा plasma membrane है ऑरेंज कलर का. Then there is a adapter, ये हमारा receptor है ग्रीन वाला, ठीक है, रिसेप्टर जिससे हमारा लाइगेंड या माइक्रोमोलिक्यूल जो भी इंजेस्ट होना था वो बाइंड होगा. दिस रिसेप्टर, इस रिसेप्टर का आप देख सकते हैं, दिस इज द साइटोसोलिक साइड. तो इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइड में एक अडेप्टर प्रोटीन जुड़ा है, एंड दिस अडेप्टर प्रोटीन इट इज मीडिएटिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्लैथरिन. ये रेड वाला जो है, दिस इज द क्लैथरिन प्रोटीन. सो दिस अडेप्टर प्रोटीन इट इज मीडिएटिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्लैथरिन प्रोटीन एंड द receptor. Okay, so this clathrin protein, जो plasma membrane है, this clathrin protein it has lined the plasma membrane from cytosolic side. ठीक है, cytosolic side में clathrin protein present होगा, and through this adapter protein, वहाँ जहाँ भी clathrin coated pit है, जहाँ पे भी क्लैथरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इट फॉर्म्स एन इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं क्लैथरिन कोटेड पिट. ओके, तो जहाँ पे भी क्लैथरिन कोटेड पिट होगा, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर प्रोटीन दीज रिसेप्टर्स विल बी असेंबल्ड. ओके, रिसेप्टर असेंबल्ड होंगे, उसमें लाइगेंड बाइंड करेगा, और फिर क्या होगा, जो हमने अभी पढ़ा, दैट विद द हेल्प ऑफ डायनामिन प्रोटीन दिस क्लैथरिन कोटेड वेसिकल इट विल बी पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और देन इट विल बी प्रेजेंट एज अ vesicle in the cytosol of the cell. Okay, so yeah, so here you can see, students, one thing, wait,
प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारा एक क्या है, क्लैथरिन कोटेड पिट का द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वाया क्लैथरिन कोटेड पिट इज शोन। सो एलडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो ईसीएम में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, सो जब क्या होगा, जब व्हेन द सेल नीड्स कोलेस्ट्रॉल, सो इट नीड्स टू ingest it from the extracellular matrix. तो क्या होगा, जैसे you can see in this diagram that here this is a clathrin coated pit. Okay, this is a clathrin coated pit. Clathrin coated pit में क्या present है, LDL receptors present है. Now LDL, it will bind to these LDL receptors. Okay, then with the help of dynamin protein, this vesicle, this clathrin coated pit, this clathrin coated vesicle, it will pinch off and detach from the plasma membrane. और क्या है, this coated vesicle, now it is free inside the cytosol. Okay, अब क्या होगा, साइटोसोल में आके these clathrin molecules, it will detach from this clathrin coated vesicles, जो आप देख सकते हैं ये black, okay, ब्लैक कलर में जो शो किया हुआ है. So these clathrin molecules, they have detached from these clathrin coated pits. Now जो हमारा ये वेसाइकिल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, LDL receptor along with LDL. Okay, तो और and these clathrin molecules, they are again sent back to the clathrin coated pits. Okay, now जो ये हमारा वेसाइकिल था, when it fuses with the endosome, okay, जब ये एंडोजोम के साथ फ्यूज करेगा, तो एंडोजोम का क्या है, एंडोजोम का pH is less. Okay, so in the acidic pH of endosome, this receptor and this LDL, they get detached from each other. Okay, and this receptor, it is again sent back to the plasma membrane. And this LDL receptor, it is in turn, it is eventually transferred from early endosome to via carrier vesicle to the late endosome, and finally to the lysosomes. And in lysosomes, after digestion of this LDL, the cholesterol is released, free cholesterol is released, which is used by the cell for its further processes. Okay. Okay, so yeah, so one one more thing, that is recycling of synaptic vesicles. So here also the same thing is shown, what happens at synaptic vesicles. Okay, the first thing is that arrival of nerve impulse at the axon terminal. जब nerve impulse आती है तो क्या होता है, the synaptic vesicles, it fuses with the axon terminal and the neurotransmitter, it is released in the synaptic cleft. Okay, तो क्या होगा, दैट न्यूरॉन ट्रिगर, जब भी एक्सॉन टर्मिनल पे नर्व इम्पल्स आता है, सो इट ट्रिगर्स द फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसाइकिल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग एंड द न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ रिलीज्ड. ओके, देन व्हाट हैपन्स, the synaptic vesicle membrane is retrieved by endocytosis from clathrin coated pits. Okay, तो synaptic vesicle का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो synaptic cleft में चले गया है, लेकिन जो synaptic vesicle का membrane है, it is retrieved by endocytosis from clathrin coated pits. तो clathrin coated pits में receptors are present, उसके साथ जो हमारा synaptic vesicle का membrane है, it gets bind, and these synaptic vesicle membrane, they are endocytosed into the cell via these clathrin coated pits. Okay, तो जब अंदर आ गया, तो अंदर आके हमने जैसे लास्ट उसमें भी देखा था LDL receptor वाले में, that once these clathrin coated pits, they become inside the cytosol, तो क्या है, the free clathrin, जो क्लैथरिन होता है, इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दीज वेसाइकल्स. ओके, और अब इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा एंडोसाइटिक वेसाइकल्स प्रेजेंट है, एंड दीज एंडोसाइटिक वेसाइकल, दे फ्यूज विद अर्ली एंडोसोम्स, and after fusing with early endosomes, the synaptic vesicle, they are regenerated by budding from the endosome, and they are refilled by uptake of neurotransmitter from the cytosol. Okay, ये जो synaptic vesicle है, ये early endosome के साथ fuse हुआ, और early endosome से ही again these synaptic vesicle ये bud हुए, and they are again reused for the release of neurotransmitters in the synaptic cleft. Okay, तो जो हमने receptor mediated endocytosis पढ़ा, इसमें हमने एक तो पढ़ा है क्लैथरिन मीडिएटेड. ओके, क्लैथरिन कोटेड पिट्स के थ्रू, एंड द अदर वन इज, देयर इज वन मोर molecule that is involved is Caviola mediated. Okay,
सो कैवियोले भी होते हैं, जैसे क्लैथरिन कोटेड पिट्स होते हैं, सिमिलर वे another protein is present that mediates the receptor mediated endocytosis, that is caviole. Okay, तो caviole का जो होता है कैवियोले मीन्स फ्लास्क शेप. ओके, सो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ भी कैवियोले प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सो देयर फ्लास्क शेप इन्वेजिनेशन इज मेड इज फ्लास्क शेप इन्वेजिनेशन एक बन जाता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज कैवियोले. ओके, so caviole mediated endocytosis में the major protein that is involved is caveolin, and this caveolin, it is an integral membrane protein which has both its C and N terminus at cytoplasmic site of the सेल. एंड दीज कैवियोले, जो कैवियोले बनते हैं जैसे क्लैथरिन कोटेड पिट्स थे अंदर को, दे आर इन्वेजिनेटेड. सिमिलरली कैवियोले भी होते हैं, दे आर फ्लास्क शेप. सो दीज कैवियोले, व्हेन द रिसेप्टर ऑफ दीज कैवियोले दे बाइंड टू इट्स ligand, so these caviolae they also pinch off from the cells, from the plasma membrane by using dynamin protein, the same protein that was being used in the clathrin coated pits. Okay, but the regulation of their internalization, that it is not well understood, or ye itna, this is the this is not very much well read. Okay, so this is, yeah, so this is it for today's lecture, students. तो इसमें हमने क्या पढ़ा? We studied 3 types of transport mechanism that are being used. पहला is passive transport, and the other one is active transport, and the third one is endocytosis. Okay, so that's it for this lecture, students. Thank you.